Bismillahirrahmanirrahim. Here Fatma, dear colleagues, students, Assalamu alaikum. Today we discuss about topic Kingdom Prokaryote, Munera. Chapter number 6, FSC Biology, also for botany students, general knowledge, CSS, PPS and other competitive exams. Dear ones, before starting Kingdom Prokaryotes Munera, what is Kingdom Prokaryote? Kingdom Prokaryote consists of organisms with prokaryote cells, means non-nucleated cells. Let's start. Munera. Munera means single. That contains unicellular organisms, uni means single cell, with a prokaryotic cell organization. Prokaryotic means pro means before and karyons means nucleus. So, prokaryotes are cells that do not have two nucleates. It includes bacteria and cyanobacteria. Means prokaryotes में two nucleus नहीं होता. The taxon Munera was first proposed as a phylum by Ernest Haeckel in 1866. Important point: examiner sometimes asks the discovery. Phylum was elevated to the rank of kingdom in 1925 by Edward Shelton. Then taxon Munera was a 5-kingdom classification system established by Robert Whittaker in 1969. First 1866, then 1925 and then 1969. Basically there are 5 kingdoms we study: Kingdom Prokaryotes, Kingdom Animalia, Kingdom Protista and other. Sub-kingdoms of Munera. सब किंगडम्स मीन्स कि इसमें हम देखेंगे आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. Dear ones, eubacteria is a true bacteria, the bacteria with the typical cell wall like murine and eubacteria. And archiobacteria is a Greek term, means ancient bacteria. The word prokaryote comes from the Greek word pro, which means before, and karyons means kernel. Kernels like nucleus before a nucleus. And archiobacteria जो हैं वो ancient bacteria होते हैं. It is a small division. The bacteria without murine cell wall are known as archiobacteria. What is archiobacteria? In previous slide we discussed archiobacteria is composed of bacteria that are collectively known as extremophiles. This is because that are capable of surviving harsh environmental conditions. The term archiobacteria comes from a Greek word meaning ancient things. Classification and characteristics of Kingdom Munera. There are 5 kingdom system, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom. Basically हमारे पास 3 kingdom, 4 kingdom and 5 kingdom and 6 kingdom को हम देखेंगे. जो 3 kingdom है वो अर्नेस्ट हैकल ने इसको आइडेंटिफाई किया था. लाइक यू मे से इन दिस डायग्राम, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखेंगे यूबैक्टीरिया एंड आर्चियोबैक्टीरिया. Then 4 kingdom classification system by Copland 1956, 5 kingdom classification system proposed by Whittaker 1969, 6 kingdom classification system was proposed by Woese, WOESE 1977. Most important point related to your one paper MCQs, sometimes examiner asks the date of the scientist who discovered the kingdom system classification.
या किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन हम देखते हैं किंगडम मोनेरा में हमारे पास 2 किंगडम्स आते हैं, इसमें यू बैक्टीरिया एंड आर्शियोबैक्टीरिया। अब डियर वंस आप ये देखें कि जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया है। अब ट्रू बैक्टीरिया में क्या है, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक में डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ साइनोबैक्टीरिया। अब आप देखें कि इसमें जो है कीमो जो है वो सल्फर बैक्टीरिया आ गया एंड फोटोट्रॉफ मीन्स साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया लाइक एज अ ब्लू ग्रीन एल्जी। आर्शियोबैक्टीरिया में हम देख रहे हैं कि हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्टी एरियाज़ में नमकीन जहाँ पे इलाका आते हैं लाइक मरी नारायण कागान, ये वहाँ पे इलाके जो हैं वो समटाइम्स जो हैं वहाँ पे सॉल्टी एरियाज़ हैं, मतलब उनके पानी जो है वो उनका नमकीन होता है। आप यहाँ पे जाएं, ये मुजफ्फरगढ़ से आगे डेरा गाजी खान वाली साइड पे हम लोग मूव करें तो वहाँ पे भी सॉल्टी एरियाज़ हैं। आर्शियोबैक्टीरिया में हम थर्मो एसिडोफाइल्स देखेंगे, हॉट स्प्रिंग्स हैं एंड मेथोनोजेंस मार्शी एरियाज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मो एसिडोफाइल्स एंड देन हम देखेंगे हेलोफिलिक बैक्टीरिया। अब थर्मो एसिडोफाइल्स क्या हैं, दीज आर बैक्टीरिया दैट कैन फाउंड लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स। दे आर आल्सो केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन एनवायरमेंटल कंडीशन विद वेरी लो pH। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। Thermoplasma pyracophyllus is a good example of thermoacidophiles. Halophilic bacteria, these bacteria includes extremely salty conditions. For example, bacteria found in the Dead Sea. How Monerians benefit other organisms? You may also see in this diagram, dear ones, beneficial decomposes plant and animals, disposable of sewage, dairy products, organic waste, produces vitamin K and vitamin B. Bacteria enrich soil are very important in nitrogen cycle. In next video tutorials we discuss about water cycle, nitrogen cycle, sulfur, हम different cycles के हम discuss करेंगे और इंशाल्लाह होप आपके next chapters में भी हम लोग इंशाल्लाह इनको discuss करेंगे. Useful to use in the way they are important in producing some food like cheese and vinegar, used in the production of some antibiotics. Methanogens also play a significant role in our lives as they are used in the treatment of sewage. These are the important MCQs related to your video tutorial and also your examination point of view. One paper. Sometimes examiner asks what kind of organism does Kingdom Monera consist of? Kingdom Monera किस पे मुश्तमिल है? Archaea, plants, prokaryotes, eukaryotes. The correct answer is eukaryotes. Which of the following includes organisms that can tolerate extreme pH level? Archaeobacteria, Cyanobacteria, Eubacteria, fungi. The correct answer is Archaeobacteria. The ones you may see in this diagram, Archaeobacteria जो हैं वो unicellular हैं, don't have nucleus and organelles except ribosome, have cell wall life in extreme environment. Last but not least, which of the following is never found in bacteria? Mitochondria, flagella, DNA, cell membrane. The correct answer is mitochondria. DNA is abbreviated as deoxyribose nucleic acid.
Thank you for watching. Any question, any query you may ask in the section box. Stay happy. Allah Hafiz.